बोलने का है। So I'll do one thing. As a, we will do a peer review in which Rajiv Thakkapanji will evaluate answer sheet of Durgesh Kumar Singh. Okay. So Rajiv ji, आप ready हैं? Yes, sir. Maximum करूँगा sir. Sure, you have to. Okay. Yes, sir. So now you all are the Rajiv Thakkapanji is the assessor and Durgesh ji is a learner. So Rajiv ji evaluate each and every point of this question and let confirm that the points are achievable or not. If there is any mistake, what kind of mistakes are there? Okay. Okay, sir. So explain those to Durgesh ji. Okay, sir. So I think it was a FLT scenario, right, sir? Is Right. question was in a financial cost financial argument. Hmm. Am I correct, sir? It's a question. Yeah, you are correct. Okay. So next question, please. It's both of your conversation. I will not come in between those. Okay. Yes. हाँ, each and every points को पढ़ेंगे. Yes. की पॉइंट्स को देखिए, जस्टिफिकेशंस को देखिए, एविडेंस को देखिए. आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा मार्किंग करूंगा. ओके. Okay, sir. Okay, sir. अगर कुछ So, कमेंट्स रहेगा तो कमेंट्स देंगे. अगर कुछ मिस्टेक्स है तो क्या मिस्टेक्स है वो बताएंगे. okay, sir. हम्म. So I will damage cost of goods. Frequent analysis we can do. Sir, first point is about damage cost of goods. तो about damage cost of goods means अपने को एक्चुअली जो क्वेश्चन है किधर किधर अपना कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट इफेक्ट हो रहा है वो क्लियर करना है. हम करेक्ट सर? Do it yourself. I'm not here. Just assume that I'm not here. And you are evaluating your paper. Okay, sir. So about damage cost of goods, there are the frequent near misses between FLT and workers causing damage to the products and spillages. तो डैमेज कॉस्ट जो इसमें गुड्स का जो डैमेज कॉस्ट लिखा हुआ है जो टेक्निकल पॉइंट में, तो इसमें वो जो सिनारियो से जो है उसमें तो नियर मिस लिखा हुआ है. Answer spillages. Near misses between FLT and workers causing damage to products and spillages. So segregation of FLT and workers may avoid loss to goods. इसमें मेरा जो जस्टिफिकेशन में थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है सर. जैसे कि जैसे अबाउट डैमेज कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखा हुआ है तो उन्होंने जो पहले जो टेक्निकल पॉइंट जो लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग है कि अपने को अवॉइड करना है डैमेज कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए. हमें करेक्ट दुर्गेश जी? आप वही मीनिंग किया ना? आपने को मीनिंग वही है ना कि अपने को अवॉइड करना है डैमेज गुड्स के लिए. डैमेज गुड्स का जो लॉसेस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स. यस. तो आपने जो सिनेरियो से दे दे देयर आर फ्रीक्वेंट नियर मिसेस बिटवीन एफएलटी एंड वर्कर्स causing damage to the products and spillages. उसका नियर मिसेस हो रहे हैं. इसका कारण ये है कि आपने प्रोडक्ट्स एंड डैमेज और स्पिलेजेस और किसका डर से नियर मिसेस हो रहे करके लिखा है. नियर मिसेस में वो जो है नियर मिस होने से वो प्रोडक्शन गुड्स का डैमेज हो रहा है ना. नियर मिस होने के आपने जो आपका जो स्टेटमेंट ये बोलता है देयर आर फ्रीक्वेंट नियर मिसेस तो द फ्रीक्वेंटली बार-बार नियर मिसेस हो रहे हैं बिटवीन एफएलटी एंड वर्कर्स. बिटवीन एफएलटी एंड वर्कर्स किसके बीच में? एफएलटी के और वर्कर के बीच में नियर मिसेस हो रहे करके लिखा उसमें. और गुड्स का डैमेज का वो मिसमैच किधर हो रहा है? causing damage to the damage to goods and spillages. तो उसमें इनका नियर मिस में होने की वजह से causing damage और spillage की वजह से मतलब एक जस्टिफिकेशन क्लियर तो नहीं हो पा रहे. नहीं तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं ड्यू टू ये जो मतलब प्रोडक्ट डैमेज हैज बीन continuously found many product damage due to
oil spillages and some not stocking due to of oil, not due to oil spillage. The spillage spillage जो है वो FLT का टकराने से ही, ऐसा एक्सीडेंट होने से ही स्पिलेज आ रहा है ना, तो यानी वो नहीं लॉस जा नहीं स्टेटमेंट में और अपना सिनारियो में ऐसे नहीं है। सिनारियो में ये दिया हुआ है उधर ऑयल स्पिलेज था, इसकी वजह से उसका गाड़ी स्किड हुआ है, जब फोन पे डिस्ट्रैक्शन होते मेरा वजह से स्पिलेज हुआ है। जो जो आप सेंटेंस का बात कर रहे हैं वो सेंटेंस मैंने नहीं लिया है इसमें, है ना। उससे Okay. थोड़ा पैराग्राफ में ऊपर में एक सेंटेंस है ना, तो उसको मैंने ये उधर से लिया है। द फ्रीक्वेंट नियर मिसेस, देयर आर फ्रीक्वेंट नियर मिसेस बिटवीन Okay. FLTs एंड ऑल्टर्स। तो वो वाला जो ऑयल स्पिलेज है और वो फिसल जाता है FLT, ये वाला मैंने पॉइंट नहीं लिया है इसमें। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस वर्कर जो है बिटवीन FLT एंड वर्कर, है ना, इसको हटा करके हम कुछ दूसरा भी कर सकते हैं इसके साथ में। अब लेकिन क्योंकि वहां आपका पे जो नहीं आपका जो टेक्निकल पॉइंट जो इधर है उधर टेक्निकल इधर में टेक्निकल नहीं इधर में आपका जो जो ऊपर में जो हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, उधर में भी है FLT एंड वर्कर्स का जो है वो एक्सीडेंट से जो क्या फाइनेंशियल कॉस्ट आता है, इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। बराबर है। तो फाइनेंशियल उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ। तो उसने आपने जो टेक्निकल पॉइंट जो दिया हुआ है टू अवॉइड डैमेज कॉस्ट ऑफ गुड्स, यस। आपने को कॉस्ट गुड्स का डैमेज कॉस्ट को अवॉइड करना है। ओके, तो हम उसको क्या करना चाहिए? देर आर ऑब्जर्व मेनी गुड्स आर स्टॉक्ड इन पाथवेज एंड रोड्स, उसमें लिखा एक पॉइंट है अपना फॉर स्पिलेजिंग ऑफ द ऑयल इट विल बी reduced to stock in a proper storeroom near the rack, which may lead to reduce the cost of the damage of the products. ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो spillage of the proper should be placed so proper oil spillage tray. It will be lead to reduce the cost of the damage of the oil spillages. यहाँ पे वर्कर्स कैरिंग गुड्स ऐसा करके लिख सकते हैं, है ना, बिटवीन FLT एंड वर्कर्स कैरिंग गुड्स, है ना, काउजिंग डैमेज टू द प्रोडक्ट। Hit कर रहा है गाड़ी। So spillage of oil and while the FLT not to the goods. Okay, so Yes. damage of goods and oil are completely visible here. So whichever evidence is first visible to us, first of all we have to use that evidence. Later on do your research. If you don't have sufficient point for it, then go for such depth. Okay, so Okay. as per Rajiv Thakkappan ji ka jo review hai, as per that this point is not achievable. Okay, what about the next point, sir? Rajiv ji, Okay. do bit quicker. Yes, management has to bear the hospital treatment cost. The workers labors won't recent accident and admit to the hospital. Okay. It's valid, right? It's valid. It's valid. Okay, let me give mark here. Worker sick leave. About the The next. management has to pay injured workers during the off work for recover from injury. तो उसमें वर्कर्स सिक लीव में अपने को इसमें लिख सकता है तो मैनेजमेंट हैज टू पे इंज्योर्ड वर्कर्स ऑन द एज पर द 6 वीक्स। तो Right. आपने जो उसमें लिखा हुआ है सिनेरियो में In वो भी थोड़ा scenario, they have mentioned that the worker was allocated 6 weeks of work. Okay. Listen one thing. Okay. ये जो points होता है ना, 6 weeks of work, location of the workplace, अगर layout के बारे में भी कुछ information देना है, I'll give you in written form that 100% this evidence must be used in any question. कोई भी question में इसका use होना ही है, इसीलिए इन्होंने 6 महीना का टाइम लिया। अदरवाइज यू कुड सिंपली राइट वर्कर सिकिंग फॉर लीव, सिंपली वो राइट कर सकते थे, व्हाई दे टुक द एफर्ट टू पुट दिस 6 वीक टाइम, राइट? कुछ मेजरमेंट या कोई चीज दे रहे हैं, यू मस्ट यूज दो। ओके, उसमें ऐसे लिखते हैं वर्कर ड्यूरिंग द वर्क ऑफ द 6 वीक्स
ऐसा उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा वो हम्म। एलाबोरेट हो जाता है। Okay. During the management has to pay injury worker during ये complete sentence ही mislead कर रहा है. Okay. Injured is Excellent. required 6 weeks of work for recovery During this period, from injury. Sick leave for injured worker will pay off. Pay by management. pay by management. By management. Right? Yes, sir. Compensation payout. Compensation payout. हाँ. तो इसमें कल भी मेरे से अपने सेम डिस्कस हुआ था, जैसे अपना लीगल का एक सेपरेट कर सकता था. Right. Here you are getting only one point, but you could use 2 different point over here. Okay, यहाँ पे Yes, 2 sir. different points बन सकते थे. Next is बन सकते high हैं. absenteeism of workers at High work. absenteeism workers workplace. The less workers absenteeism is high. High financial impact करके. How the workers absenteeism rate is high? कैसे high? दुर्गेश जी बताएंगे यस सर. कैसे high है यहाँ पे? सिनेरियो में सर है. Okay. वो हाई So due है to कैसे, frequent क्यों near रीजन? हाँ. So the financial losses नहीं absenteeism high के होने की वजह से staff turnover rate बढ़ेगा. So the financial losses due to staff turnover rate will be bear by the organization. Okay, staff turnover का भी अलग से लिया है. Okay, that will be correct. सर But दोनों जब है. absenteeism rate एब्सेंट बढ़ता है, एंड टर्नओवर ऑफ वर्कर्स हाई हाई ऐसा करके लिखा है. listen, absenteeism और sick leave जो है ना, it's bit similar to each other. Okay. और यहाँ पे absenteeism की जगह आप इस like क्योंकि absent से other workers, so may other rest worker required to do overtime. राइट. बहुत सारे वर्कर एब्सेंट है तो दूसरे वर्कर उनकी जगह ओवर टाइम करेंगे. सो यहाँ पे ओवर टाइम कॉस्ट टू द वर्कर. अभी देखिए एब्सेंटीजम का कोई कॉस्ट देता है वो तो प्रॉफिट हो गया ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो प्रॉफिट हो गया ना. क्या वो लॉस होगा उसके लिए? तो एब्सेंटीजम की वजह से ही में प्रोवाइड ओवर टाइम टू रेस्ट वर्क. सो द ओवर टाइम कॉस्ट ऑफ द वर्कर विल बी bear by the organization. Okay, so this statement also is not valid. Now हाई move on टर्नओवर to ऑफ वर्कर्स. so here you are achieving 3 out of 10. You have to add more effective points, more effective justification, and there are several evidence from the scenario. Scenario में बहुत सारे evidence that you supposed to draft. Okay. Okay, sir. Okay. The injured worker and the fellow worker may have contravened the responsibility. As per Article 19, as per C155, Article number 19, injured worker and the fellow worker failed to cooperate in fulfill by their employer on the obligation. They avoid the instruction of the store manager who told them not to use compactor machine until it had been fixed. Okay.
Injured worker and the fellow worker failed to cooperate with the employee in the field of occupational health and safety at the beginning of night shift. Experienced temporary worker operated the contractor control of the compactor. Although warning signage specified authorized worker only to use the compactor. As per 19C, representative of worker is undertake are given adequate information measured to taken by the employer. The day shift manager, he is not a part of your representative. ऑल्सो यहाँ पे दो ही वर्कर्स को एम इसका ही करते हुए बात कर रहा था। हाँ, दो ही वर्कर को एम करते हुए क्वेश्चन किया गया है, राइट? तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का सवाल ही नहीं उठता है। नेक्स्ट इज Yes, sir. अबाउट 19D, worker and the representative is undertaken are given appropriate training in occupational safety and health. There are no written job description and limited instruction or training how to do the work. ये एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट हो रहा है, एम्प्लॉय का रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट ही नहीं हो पा रहा है। द इंजर्ड वर्कर इन द मैं रिप्रेजेंटेटिव को सुपरवाइजर और इंजीनियर, सुपरवाइजर और वो शिफ्ट मैनेजर में उसमें मैनेजर को चला था। No, that will not consider. Injured worker and the fellow worker fail to take reasonable care of their own safety and that of other person who may be affected by the act or omission. The experienced worker and temporary worker use a compactor even if there is a fault in the compactor safety protection device. Okay, ये already use हो चुका है. There is an instruction on it, so we can't consider it. ये repeat हो जाएगा. Injured worker and fellow worker failed to comply with the instruction for the health and safety. Injured worker and their work fellow worker did not follow the shift manager instruction. The compactor was faulty and it would be fixed next time. क्या वही एविडेंस पॉइंट 1 पे भी यूज हुआ है? हाँ जी, सेम यूज हुआ है ना? हाँ सर। तो रिपीट हो जाएगा ना, ये रिपीट पे तो पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर कितना को सर बोल रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 6 जो है वो पॉइंट नंबर 1 से सिमिलर है, वहां पे भी आपने वही पॉइंट दिया है, देयर इज इंस्ट्रक्शन फॉर नॉट टू यूज द कंपैक्टर, राइट? Failed to use safety device and protection equipment correctly after compactor safety device has stopped working. Experienced worker and young worker operate the faulty compactor whose safety protection device was not working. That could be considered. Failed to report forthwith to the immediate supervisor any situation which they have reasonable to believe could present a hazard which they cannot themselves correct. The experienced worker and temporary worker immediately open the safety gate and trying to clean the jam of the compactor instead of report it to supervisor. Okay. Report any accident or injury health which raised in the course of connection with the work. After accident, temporary worker did not report to anyone. As he did not know what else to do in an emergency. Yeah. That could be considered, but kahin na kahin it seems like similar to no. It's 4 marks, 5 marks out of 10. Okay. सर फर्स्ट वाला एक बार देखना चाहते हैं। अवॉइड टू इंस्ट्रक्शन द मैनेजर टोल्ड द कंपैक्टर। ओके। They avoided instruction of the store manager who told them not to use the compactor until it had been fixed. Okay. Same चीजें यहाँ पे यूज हुआ है। Injured worker did not follow the shift manager's instruction. The compactor was faulty and it would be fixed next day. तो यहाँ पे स्टोर मैनेजर, ये सर शिफ्ट मैनेजर बोल रहा है ना सर? तो ये सर शिफ्ट मैनेजर बोल रहा है, वो अलग है। पे एक ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, बट स्टोर मैनेजर शिफ्ट मैनेजर ही इनको बोला है। स्टोर मैनेजर इनको कहाँ पे बोला है? स्टोर मैनेजर ने इनको बोला है कि शिफ्ट मैनेजर को बोला है? उसने शिफ्ट मैनेजर को बोला, स्टोर मैनेजर शिफ्ट मैनेजर को बोला है और शिफ्ट मैनेजर आपको बोला है, तो स्टोर मैनेजर शिफ्ट के साथ वर्कर्स का तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? या तो वो पॉइंट कंसीडर होगा या फिर ये पॉइंट कंसीडर होगा, दोनों में से कोई एक। ओके, बेटर ये वाला रहेगा, इस पे आपको जल्दी अच्छे से मार्क मिलेगा, वहां पे शायद से नाम मिले। ओके, ठीक।
फिर की बात करें, क्वेश्चन for further improvement. For further improvement, you have to follow PE principle. Use right evidence. Scenario. Right? Give more effective points. Give more effective points. Avoid. Use repeat evidence. Okay. So, sir, you need to improve on these cases. Okay, उन जगह पे आपको improvement करना है अभी. Yes, sir. Okay, sir. Next is about the contractor management. Submitted. श्रवण कुमार बेहरा जी असाइनमेंट सबमिट किया. श्रवण जी है यहाँ पे. कीजिए. Why you are appearing wrong question? श्रवण जी, हेलो. आप गलत क्वेश्चन क्यों हमेशा अपेयर करते हैं? Temporary temptation will be appear selling to make the fixed target. You get the bonus. You'll sell more car than influenced by all the apprentices, so that the apprentice will not follow the health and safety culture. To sell good people, feed bad people. Good people to feed bad people. One apprentice used a fire extinguisher to wake up the sales supervisor who laughed. Okay. To wake up the sales supervisor who laugh and put the fire extinguisher back. Here, apprentice to influence bad things to sales supervisor and fear of the group. You may try to give evidence, give right justification, but you have been influenced. Okay, you are not able to justify as per the question demand. Question demand के हिसाब से justification नहीं हो रहा है. Sentence इधर उधर हो रहे हैं. It's not that much aligned. उतना aligned नहीं हो पा रहा है. Okay. Scenario linking है. Okay, as I said, the experience who are the signified HOs. Also self-supervisor to explain the experience of 17 years old side apprentice. Usually at the expense of safety driven by cars. But how it was influenced how it was influenced to the injured worker. Okay. A worker did not know about 5 mark drill. It is a false alarm by the children. No, it's not effectively justifying. Scenario linking है, but justification was not effective. Okay. For further improvement,
follow P principle. Okay. Need to work on grammar, right translation. More additional points also required. और भी ज्यादा additional points की requirement है. Let's see और कौन से assignments हैं. दो assignments यहाँ पे. Step 4 पे दो assignments है. कौन कौन दिए देखते हैं. 7 बेरा जी दीपक कुमार ठाकुर जी. दीपक ठाकुर जी अवेलेबल है. हेलो. Yes, sir. अभी number 9, prioritizing health and safety issues. Okay, the points you have discussed in health and safety committee meeting, right? Yes. The director of organization do not believe that health and safety is a full-time job. He think it's waste of time. Okay, so that issue also we will discuss in a meeting. One more thing, जब आप whenever you are beginning any sentence, अगर जब हम कोई भी sentence begin करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज था इसीलिए मैं मतलब बंद कर दिया था. ओके लेट्स सी एम्प्लॉय मोरल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी. सो जब भी हम कोई सेंटेंस बिगिन करते हैं हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको ये एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करते वक्त आपको बताया नहीं था. ओके बट बाकी सब क्वेश्चन में बिगिनिंग में हमेशा लिखता हूं एक बिगिन स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना सर कि हम क्या Yes, sir. एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं, राइट. Right, sir. सो द मेजर इशू, the 10 issues are the issues which should be discussed in committee meeting where, okay, जो भी issues आप डिस्कस करने वाले, right, we are discussing the committee issues on health and safety, issues on health and safety we should discuss on committee meeting where. So employee moral and health and safety, no, it's like यहाँ पे right की point क्या हो सकता था, it could be prioritize to health and safety. Okay, health and safety को prioritize कराना. The director of the organization will do not believe that health and safety is a full-time job. Okay. या ये भी एविडेंस है ना, ये जस्टिफिकेशन ये बहुत जेनरिक हो जा रहा है. यहाँ पे मार्क मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं कभी कभी कभार, अगर एग्जामिनर अच्छा रहा तो दे सकते हैं. ओके सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड कर दीजिए. ओके सो Okay, इन sir. कमिटी मीटिंग मैनेजमेंट टू address to prioritize health and safety in business. Okay. So मैनेजमेंट जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को बिजनेस में प्रायोरिटाइज करना चाहिए.
health and safety advice. There was not health and safety representative who raised specific health and safety issues in the organization. Okay, so that should be addressed. They should appoint health and safety advisor, right? Sorry, health and safety Yes, sir. representative. Appoint competent health and safety representative. एक additional statement missing है, वो दे देंगे तो better रहेगा. Okay, sir. Cell, plant and machinery. The bakery machine was quite old and frequently need the part to be replaced. The management promised the worker to replace the old machine, but this promise has not been kept. Okay, consider. Inspection. The bakery machine's inspection did not complete and did not keep inspection record from last 15 years ago. As last record maintained on engineer's diary. Okay. Inspection report 15-year old. Okay. You go right. Frequent inspection of workplace. Accident and near miss record. There was no record of accident and near miss which has frequently occurred, but shift manager said that did not accident happen often. Workers said earlier accident happened frequently. Accident happen frequently will be enough. Accident rate, workers said that the frequent. Okay, similar हो जा रहा है ना? Repeat evidence. It's a repeat evidence. Okay, sir. Staff turnover as accident, unfortunately both. What is age accident unfortunately? वहाँ पे सर जो हाँ, दो बताइए. वर्कर्स जो था, दो वर्कर्स जो इसका कन्वेयर बेल्ट को रिपेयर करने के लिए वो अंदर जा रहे थे, तो उस समय वो जा करके उसमें अंदर की तरफ जाने लगे और उनको बाहर आने का कोई एक्सेस नहीं था. So age in recent accident, age accident unfortunately ये नहीं होगा. Okay. Age in recent accident, both worker died from their injury at the scene. Which scene? At one while engaged for maintenance inside it. Right. Okay. Factory machinery maintenance did not. ये repeat हो रहा है. Training need, lots of people receive faster training, but it was a long time ago, and many of them left the organization. Acceptable है, फिर भी statement we need to add. Investigation of accident and near miss. Bakery organization not do any investigation of earlier accident and near miss which frequently happen there. Is there any statement जहाँ पे बताया जा रहा है near miss investigation नहीं हो रहा है और उसका क्या impact है वो भी justify करना है. Okay, sir. Justify what are the impact of investigation. So you are achieving your 1, 2, 3, 4, 5. 5 marks out of 10. I'll grade you. Writing skill is poor, scenario. You have followed the P principle.
added sufficient points but for further improvement you have to use more effective key points. Okay, you have to use right justification more effective scenario linking और भी इफेक्टिव सिनेरियो लिंकिंग की जरूरत है. ओके सर. They've attempted the wrong question, गलत क्वेश्चन वापस अटेम्प्ट किए हैं. दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया था. ओके, ओबी नंबर 10 टास्क नंबर 1 अपेयर किए हैं. FLT scenario, attempt the wrong question, you have attempted wrong question. हर जगह ऐसे थोड़ी होगा सर, आप इतने बच्चे जैसे रहेंगे तो थोड़ी होगा. इसको असाइनमेंट नंबर 1 था ना सर हमारा एक, तो आपको यहाँ पे आपने असाइनमेंट नंबर 4 पे क्यों ऐड किया इसको? इतना भी अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप. इस तरह चलता रहा तो निवोस के लिए आप काफी क्वालिफाइड नहीं रहेंगे. और इसके ऊपर ऑलरेडी कमेंट मैंने दे दिया. हाँ जी. Yeah, those were not acceptable. I have gone attempt since third assignment को रेस्ट लर्नर्स भी अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट 3.4 कंप्लीट होने के बाद आपका मॉक टेस्ट भी रिलीज हो जाएगा. सो यू ऑल मस्ट अपीयर मॉक टेस्ट एज वेल. सो ध्यान रखिएगा, हर किसी का असाइनमेंट सारे कंप्लीट करने हैं. ऐसा आधा अधूरा छोड़ेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी. और ऐसे जैसे श्रवण जी कर रहे हैं वैसा गलत असाइनमेंट सबमिट करोगे तभी भी मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा और आपको फीडबैक नहीं मिल पाएंगे टाइम. ओके, एटलीस्ट आप लोग बच्चे तो नहीं है, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है कैसे गूगल क्लासरूम यूज कर रहे हैं, करना है. हमें डे वन से हमेशा बताते आ रहा हूँ. अगर इसके बाद भी आप ऐसे बिहेवियर करेंगे, रखेंगे, ऐसा अप्रोच रखेंगे, तो सॉरी, यू विल नॉट एबल टू अचीव विवो आईटी क्वालिफिकेशन. ओके, so that's all from my side. If you all have any doubts, any queries about your previous classes, you all could raise your hand. अगर किसी को कुछ डाउट है प्रीवियस क्लासेस को लेकर तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं. हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है प्रीवियस क्लासेस को सर. लेकर? हेलो हाँ जी सर. जी ये सर. मोरल में आप यू हैव गिवन मी द फीडबैक दैट you have to go to the PEC line, PE line में that means that scenario based something you have to go linking is to be correct. I tried all the things you told me. In moral obligation, the I can give for that removal, factory removal? Can you go to the scenario and tell me, sir, what the moral obligations we can give? What are the moral expectations of worker? Can you Yes, simply yes. do one thing? Open your class notes and tell me what are the moral obligations of workers upon employer.
Explain it. Human, if moral obligation means what I can tell the invest answers as per the scenario is coming means generally you just tell me what I can tell. Moral obligation, uh, it is the duty of the removal company as reasonably as possible practically at the moment of shifting piano at the house, I told. But as per the scenario, it is wrong. I think what I given is wrong identification, I think. But what I have to give actually in the you generally you tell what is the in moral obligation, what I have to tell, and in right way to the commitment, the that just you generally explain the things. Yeah. First of all, here you can see the first statement you have given here. It is duty of removal company, reasonable, possible, practicable movement and shifting of piano is at the house. But tell me how the reasonable adjustment was not there. कैसे नहीं था वहाँ पे reasonable adjustment? Can you tell me that? In this scenario, how the adjustment was not reasonable? This was duty of care is to be management side, it has to come. This management side means the practical application is different. Management side of duty care is to give the proper PPEs or like that any what we can say that safe operation procedure, risk assessment, like that we have to tell. Or No, from scenario, tell me, give me evidence which express that employer didn't provide any reasonable facility to worker. Tell me from the scenario. Actually, they've given one banksman for maneuvering. Where? Where in the safe system of work they given in that place. First paragraph notice there. They have provided, they have implemented that process. They have implemented Yes. the safe system of work at place. Yes, When, yes. while reversing vehicle, there should be a banksman at that place. But while in recent piano shifting, the time of piano shifting at client's house, no one is there as a banksman. Right? No one is there to help the worker who was shifting piano. And Okay. no one, they will not even access the risk at client's house. Okay. So different points. You have to justify those differently. In some points differently आपको justify करना है. Then only you will be able to achieve the mark. Otherwise, we can tell that it is the duty of not careable of removal company They of given didn't not consider proper the supervision, data. not given proper supervision or like that. We can Right. give no point. Right. And in ethical way to provide the safe working environment is to be done by material removal, giving proper access by providing alternative route and all for the vehicle by the It's a company management. recommendation. It's a recommendation. It's a The recommendation. Actually, it is right only, na? It is right only, or we have to tell the right only, na? No, you have to listen. Always, while there is a question on comment, you only have to limit it with the scenario evidence. You are not supposed to recommend anything like they should provide alternative access. They should provide. Okay, you are not supposed to do that. As per the scenario in ethical way, what we have to write actually in as per the scenario, what we have to write. So this is the ethical responsibility of employer to assign a competent worker for piano shifting. While in recent accident, a young worker was allocated to shifting piano. Yes. Okay. As So per the scenario. Right? Yeah, That's in right way to do the things, right way to deploy the competent porters with proper experience. I changed the scenario. That's a problem. In this matter, what we have to do, sir? In right way to do the things. Right, deploy the competent do porters. the things rightly. Competent porter with the proper experienced person at the work location for material
shifting and Ah. removal to avoid injury and accident. You have you have Hmm. only recommended. Yeah, you could add one more thing. How it was not happen here. How was the things went wrong? Okay, that's what you have to explain from the scenario. Okay. Yeah. Hmm. Anything else, sir? No, nothing. Okay. So can we move forward to today's topic? No. Yes. Okay. Okay. So now today we'll start with element 3.4, which is about accessing risk. Okay. And the learning outcomes, what we will get here is on, like, we are going to understand the meaning of hazard, what is hazard, what is the meaning of risk, how to profile risk assessment. Can anyone tell me, raise your hand if you know what is the meaning of hazard? Anyone? Raise your hand if you know what is the meaning of hazard. बुलंदर जी बताएंगे what is the meaning of hazard? Sir, potentially which come harm to physically or property damage is known as hazard. Okay. दुर्गेश जी बताएंगे what is the meaning of hazard? दुर्गेश जी. Any situation which has a potential to harm human or property damage to property, ऐसा बोल सकते हैं. Sir, risk is likelihood and consequence. I'm asking about hazard. Hazard is something which has a potential to cause harm. Hazard is causes anything causes harm, sir. So hazard is something, anything which has a potential to cause harm. उसको हम hazard बोलते हैं. And risk, the chances of being exposure to hazard. जो संभावनाएं होते हैं to exposure to hazard will known as risk. Okay. Then risk profiling and risk assessment कैसे करना है? Okay. That's we are going to learn here. In risk profiling, we must have to identify who involved in the task, who should be involved in the risk assessment, and risk profiling process we are going to learn. And also in forward, we are going to learn purpose of risk assessment, how a suitable and sufficient standard need to be reached. Okay, as per HSC 65 managing for health and safety. Okay, so those things we are going to discuss today. And on the next step, next class, we will go this to approach the 5 steps of accessing this. Okay. So now, what is hazard? What is the meaning of hazard? So hazard basically anything. Hazard is anything, any situation. Okay, anything which has a potential cause to harm. Like कोई ऐसा machinery या substance जिसके वजह से कोई भी worker harm हो सकता है. Which can cause to damage of property, which can cause to any physical injury to worker, well known as hazard. Okay, and at our lifestyle, hazard is always available. Okay, there is nothing like hazard in missing. Anytime, any place, the hazard is exist anywhere, everywhere. Okay, even you are sitting in the wrong position, watching on a mobile phone or laptop very closely, that's a hazard that has potential to cause eye injury. Okay, and work continuously sitting on same position for 3 to 4 hours. There is a hazard to face work-related upper limb disorder, right? So everywhere there is a presence of hazard. And hazard is being categorized in 5 categories. One is physical hazard, through which where like the hazard while you are exposing to an hazard physically, like by contact, by which has potential to come in contact with the skin and you get injured through it. For example, exposing to electricity, exposing to noise, vibration, radiation, and machinery. Okay, unguarded machinery. In the recent scenario OB number 5, you have learned that worker was exposing to hydraulic ram of the unguarded compactor machine. Okay, so these are the example of a physical hazard. If you talk about the chemical hazard, by exposing to any chemical hazardous gases or solvents, जैसे कि your mercury, solvents, carbon monoxide, H2S, Cl2. Okay,
So these are the chemical hazard. If you talk about the biological hazard majorly defined from any kind of virus. Okay, the contaminating virus or the bacteria. Okay, those were considered under biological hazard. जैसे कि legionella bacteria, hepatitis, COVID-19, rubella virus. Okay, these are the example of a biological hazard. Now, ergonomic, which I told you in the beginning, continuously working on the same position. Okay, manual handling, WRU, work-related upper limb disorder. These are the part of your ergonomic hazard. And if you talk about the psychological hazard basically defined from being overstressed. Psychological hazard basically defined like mental stress, overload, work overload hona, okay, violence at work, overstressed. Okay, these are the part of your psychological hazard. Okay. Now, what is risk? Risk means risk is the likelihood of harm actually occurring from the workplace hazard and their consequence. Okay, किसी भी तरह का hazard या उसके consequence की वजह से the possibility of exposing to hazard will known as the risk. Okay, so degree of risk depend upon the likelihood of harm happening and severity of injury, damage or loss might be forcibly up. Okay, so कितना chances है to exposing to risk is only defined the type of injury and possible severity workers may face, like damage or loss. Okay, like for example, if you can see only there is in a sea only a shark is available is a hazard. Presence of shark is a hazard, but when it becomes risk, if we are working near to it, if we are swimming near to shark, then we are exposing to risk. Okay, available like one of the welding machine with damaged cable is a hazard, but it will not convert to risk until someone use it. जब तक उसको कोई यूज ना करे तब तक वो रिस्क में कन्वर्ट नहीं होता, right? Same goes to your real, if you give an example of real life scenario. Okay, अब अभी आप लोगों के एग्जांपल ही देखिए. Not appearing assignment, not submitting assignment is a hazard, but where the risk arise if you are appearing exam without appearing any assignment, then वहां पे रिस्क होता है, राइट? रिस्क है वहां पे फेल होने का, वहां पे रिस्क है 50 to 60,000 रुपीज का लॉस होने का, राइट? रिस्क है ना. असाइनमेंट प्रैक्टिस ना करना हजार्ड है, वो गलत है, बट रिस्क कहाँ पे आता है आपको? अगर उसको सबमिट किए बगैर आप जाके एग्जाम में बैठते, देयर इज द रिस्क. सेम अगर घर पे जब हम होते हैं, घर पे वर्क करते हैं, कभी घर पे जाते हैं हम ऑकेजनली. ओके, घर पे किसी भी तरह का लीकेज वगैरह होता है, स्पिलेज वगैरह होता है. सिर्फ स्पिलेज होना या घर पे लीकेज होना इज अ, but working near to it without adequate precaution is a risk. Okay, so that's what I have compiled with some real life activities. So let's move forward. What is risk assessment? Okay, risk assessment is about, risk assessment is a process by which we evaluate the risk. Like we know this is the condition, so and so are the unsafe condition, and what organization have taken to prevent any kind of occupational accident due to certain circumstances or certain conditions. And after analyze those things, after evaluate the level of risk, what they do, they measure what are the precautions were taken, and they decide what further actions we could take so that we could address the risk associated with that activity. उस टास्क से क्या रिस्क एसोसिएट है उसको इवैल्यूएट किया जाता है एंड फर्दर कंट्रोल मेजर रेकमेंड किया जाता है. ओके, सो वो जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है थ्रू व्हिच यू इवैल्यूएट द रिस्क एंड गिव फर्दर कंट्रोल मेजर, दैट विल नोन एज रिस्क असेसमेंट. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स की बात करें. फर्स्ट, द इंजरी एक्सीडेंट, like any unwanted unplanned event जिसकी वजह से we got any kind of personal injury, जैसे कि blood loss, amputation, okay, laceration, sprain, strain, bruise, cuts. Okay, these are the events, these are the injury accident where due to some event, due to some accident we are getting some type of physical injury. Damage only accident,
लाइक ऐसा एक्सीडेंट जहाँ पे कि किसी भी तरह के वस्तु या प्रॉपर्टी गेट डैमेज, द अनवांटेड और अनप्लान्ड इवेंट in which the equipment or the material got damaged but no one get hurt, जिससे कि कोई हर्ट नहीं। कभी कभी आपके लाइफ में भी कहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, आप कभी एक्सीडेंट को भी फेस करते हैं, गाड़ी डैमेज हो जाता है, सामने वाले का भी गाड़ी डैमेज हो जाता है, बट दोनों में से किसी को भी, जो भी राइडर है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ओके, those were the event when property get damaged but no one get hurt, neither the member of public nor the worker using them. The near misses, the unwanted या अनप्लान्ड इवेंट, ऐसा अनवांटेड या अनप्लान इवेंट जहां पे चांसेस था कि प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता था या कोई इंजर हो सकता है, बट ना तो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ ना कोई इंजर हुआ। ओके, सो उन केसेस को हम नियर मिस बोलते हैं। सो वेरियस कुछ नियर मिस को भी दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखा जाता है। वन इज अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नियर मिस एज एक्सीडेंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नियर मिसेस को एक्सीडेंट के तरह ही ट्रीट करते हैं, दे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट द नियर मिस। ओके, सो उस तरह के केसेस में हम नियर मिस को जे एक्टिव मॉनिटरिंग मेजर में कंसीडर करेंगे। ओके, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड द नियर मिस इन डिफरेंट कैटेगरी लाइक नियर मिस और सिग्निफिकेंट नियर मिस और हाई पोटेंशियल नियर मिस। ओके, डिफरेंट कैटेगरी में भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कैटेगराइज किए हैं नियर मिसेस को। ओके, it is generally called or known as narrow escape, near hit, just miss, close call to collide, etc. So OSHA defined a near miss as an incident in which no property was damaged, no person was injured or sustained, but was given slight shift time to property damage or someone to get injured. Okay. Now the dangerous occurrence, a specific event which causing loss or damage, but no necessary potential injuries may have been reported to the relevant authority by national or local law. Okay, reporting to injury, disease and dangerous occurrence regulation 2013. Okay, so RIDO 2013, RIDO का मतलब होता है रिपोर्ट टू इंजरी, डिजीज एंड डेंजरस ऑकरेंस रेगुलेशन 2013 के तहत अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, बड़ा इवेंट या बड़ा ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ है बट कोई इंजरी नहीं हुआ, तो उस केस पे भी हमें उसको रिपोर्ट करना है एनफोर्समेंट अथॉरिटी को। जैसे कि बड़े बिल्डिंग्स में आग लग जाना, हॉस्पिटल में आग लग जाना, ओके, मॉल्स में आग लग जाना, भले ही कोई इंजर ना हुआ है बट स्टिल हमें उसको रिपोर्ट करना है एनफोर्समेंट अथॉरिटी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि फेल्यूर ऑफ द लोड बियरिंग पार्ट्स ऑफ द क्रेन is a dangerous occurrence. No person have been injured by the failure, but the failure itself is reportable. Gas leakage in chemical plant or equipment coming into contact with overhead power line, electric short circuit or overload that cause to fire or explosion, an explosion or fire that cause to normal work to halt more than 24 hours. Okay, so these are the events which has potential to cause harm. Ill health incident, an unplanned, unwanted event which lead to ill health. Example of occupational diseases like carpal tunnel syndrome, CTS, several cramp of the hands or forearm, occupational dermatitis, hand-arm vibration syndrome, HAVS, occupational asthma, tendonitis or tendinosis to hand or forearm, any occupational cancer, diseases attributed to any occupational exposure to a biological agent. So you guys should participate on it, and from these 4 pictures specify which one of these is an unsafe act. Haji, let me assume this is number 1. Moving under the suspended load. Moving under suspended load, it's an unsafe act. Now tell me which one of these is an unsafe condition. It's a damaged hook. Damage hook, the option number 1. 1. Which one is a near miss? It's a falling of the object. It was not harm to persons. Right. And the accident? So that's when the falling object has been hurled out to persons.
About the fund. right? So do one thing, take a screenshot of it. Okay, इसका screenshot ले लीजिए and collect it as a evidence for participate in group activity. Element 3.4. Okay, done. Then we'll move forward. Now, objective of the risk assessment. Why we conduct risk assessment at workplace? हमें क्यों risk assessment करना चाहिए? First of all, it helps to eliminate the hazard को eliminate करने में मदद करता है. It helps to prevent, reduce or control the risk to a acceptable level. Acceptable level तक risk को control में लाने में मदद करता है. It helps to prevent fatality or personal injury and ill health. किसी भी तरह का personal injury, ill health और fatality को reduce करने में मदद करता है. Help to prevent other type of losses due to accident. It helps to prevent breaches of statutory law, which might lead to enforcement action and or precautions to achieve the legal compliance as per Act 74 and MHSWR Act 99 and ILO. It helps to prevent direct and indirect costs that follow in the form of accident or financial losses. It makes people aware of hazard. It helps to create safer working environment. सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है. ओके, हु कैन बी द रिस्क असेसर? कौन रिस्क असेसमेंट कर सकता है? किनको हम इन्वॉल्व करना चाहिए? सो द रिस्क असेसमेंट शुड बी कैरी आउट बाय कॉम्पिटेंट पीपल. एक कॉम्पिटेंट पीपल जो है रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. लाइक व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंट दे मस्ट हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द टास्क. लाइक जिस भी एरिया का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं या जिस भी सेक्शन का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, he must be competent enough. He must be aware about the risks associated at place. He should be a health and safety specialist. He should be a technical specialist. He must be trained. He must be experienced to conduct risk assessment. He must be skilled enough and able to implement rules, regulation, and guidance of health and safety. Okay. So a risk assessment might be carried out by one person or a team. A risk assessment जो है mostly एक या उससे ज़्यादा person से किया जाना चाहिए. A team including those of worker familiar with the task, jobs, and areas which to be accessed, health and safety specialist, technical specialist, supervisor, and line manager, workers representative. Okay, so these are the persons whom we could allocate to conduct risk assessment. Then how a suitable sufficient risk assessment improves? A suitable sufficient risk assessment दिखने में कैसा? It states the name and competency of the acquisition. जो भी acquisition है उसके competency और name specified होता है. Identify significant hazard and risk. Okay, proper check to be made. Identify person in the risk who might be affected, worker and others. Example, visitor and vulnerable people. Evaluate effectiveness of the control measure. Okay, ये जो है effective control measure recommend करना चाहिए. Precautions are reasonable and remaining risk is low. यहाँ पे जो precautions दिए गए that should be reasonable. Identify the additional control required. Enable employer to prioritize control. Record significant findings. Risk assessment should be appropriate to the nature of work. Nature of work के हिसाब से appropriate होना चाहिए. Risk assessment should be proportionate to the risk and state validity period. Okay, risk assessment में validity time period होना चाहिए. Okay. And it should proportionate to risk. ये जो है risk के साथ align होना चाहिए. Like ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे organization का risk assessment लाके हमारा organization का करके express करें. Okay, that should not be effect in the risk assessment. Okay. So in next session, like कल के session में हम जो पढ़ेंगे about different steps of risk assessment. Okay, risk assessment के different steps को हम discuss करेंगे. Like identify people in hazard. Identify who might be harmed and how, and we'll evaluate the risk, decide the precautions required, record the significant hazards and findings, and how to review and update as per the necessity of the risk assessment. Okay, इन सब चीजों के बारे में हम जो है कल के क्लासेस में 1 to 5 step 1 to step 5 सारे स्टेप डिस्कस करेंगे about the risk assessment. And make sure कुछ चीजें आप पढ़ के आएंगे, जैसे कि OB5 completely पढ़ के आएंगे.
उसका जो सबसे टफ असाइनमेंट है, यहाँ तक जो मानते हैं लर्नर ज्यादातर मानते हैं, वो भी नंबर 5 का एक असाइनमेंट है, इवैल्यूएट लेवल ऑफ रिस्क। वो थोड़ा टफ आता है लर्न, तो वो चीज को भी हम कल डिस्कस करेंगे। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट आवर क्लास एट 8 o'clock. Okay. Okay, sir. Okay. So for today, if you all have any doubt on our previous slides or previous topic, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर मेरा कुछ असाइनमेंट अभी तक एक ही मेरा से रखा है, बाकी तो मेरे पेंडिंग है। मैं संडे तक थोड़ा कर दूंगा, लगता है मेरा कुछ असाइनमेंट अभी क्लोज हो गया है। तो मैं एक बार संडे प्रिपेयर करके मैं संडे इवनिंग तक मैं आपको करके मैं मैसेज करता हूँ सर। जो 8 से तो उस टाइम 8 करता हूँ, कुछ पेंडिंग है तो मैं आपको मैसेज करता हूँ सर, पर्सनल मैसेज करता हूँ। चलो IG2 का भी मेरा प्रिपेयर कर दिया है, थोड़ा पेंडिंग है खाली जस्टिफिकेशन देने का। बाकी का मैं एक बार आपको पर्सनल एक व्हाट्सएप कर देता हूँ सर, एक बार चेक कर लीजिए सर। मुझे कंप्लीट रिपोर्ट से भेजिए तो रिव्यू होगा, Yes. क्योंकि अभी भी और भी बहुत सारे रिपोर्ट से ऑलरेडी आ चुके हैं जो भी ओके अभी सर, मैं करके भेजता हूँ सर। कंप्लीट करके भेजिए। जो भी रिपोर्ट भेज रहे हैं कंप्लीट करके भेजेंगे तो हमें जो रिव्यू करके देने में बेटर है। यस ठीक है, सर, कंप्लीट कर तो ठीक है। और कुछ? सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभी मैं तो कैंटीन में था तो इसीलिए आपका ये नहीं कर पाया। वो एक असाइनमेंट में दिया था, लेकिन उसका OB001 का वो हम्म क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, आप देख लीजिए। मतलब ऊपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट पहले किए थे, वो उसको छोड़ के उसके नीचे 8 नंबर है, ओके। देख लीजिए। उसका नीचे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 टास्क नंबर 7। टास्क नंबर 8 कौन से असाइनमेंट में असाइनमेंट नंबर क्या था? ये असाइनमेंट नंबर तो ऐसे तो मुझे रखिए एक मिनट। असाइनमेंट नंबर 4 एलिमेंट 3.2। कार सेल शोरूम, राइट? इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट जो हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 इंडिविजुअल ह्यूमन सिनेरियो फैक्टर। का कोई भी असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 4 पे दिया ही नहीं था। उसके नीचे है, हाँ वही। हाँ, बट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है इंडिविजुअल ह्यूमन फैक्टर का असाइनमेंट नंबर 4 पे। ये असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन है। असाइनमेंट तो दिया है, लिखा था इसमें, आप दिए असाइनमेंट थे, मैं नंबर, लिख के रख। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हो ना इंस्ट्रक्शन, FLT सिनेरियो टास्क नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 5, यहाँ पे सबमिट है ही नहीं आपका। उसको यहाँ पे सबमिट कर लीजिए, मैं आपको तुरंत ही इवैल्यूएट करके दे दूंगा। ओके, वो असाइनमेंट 4 में भेज दिए क्या? हाँ, या असाइनमेंट 4 में आपने भेजा है, असाइनमेंट 5 में इसको सबमिट कर, राइट असाइनमेंट राइट जगह पे सबमिट कीजिए। ये प्रैक्टिसेस अभी से डालेंगे तभी जाके एग्जाम में नहीं दिक्कत नहीं होगा। ओके, ओके, नहीं क्योंकि मुझे ये उसके बारे में फैमिलियर नहीं है ना, इसीलिए पता नहीं चल रहा है, ये पहली बार फैमिलियर होना इधर। पड़ेगा सर, टेक्निकली फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े अच्छे हम्म, पोजीशन में अच्छे प्रोफेशन में है हम। अगर हम इतना भी हम्म। टेक्निकली नहीं ट्रेन, नहीं, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन अभी थोड़ा 2 दिन क्लास नहीं किए थे ना, इसलिए पता नहीं चल रहा। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 5 पे सबमिट कर देंगे तो मैं आपको रिव्यू कर दूँ। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। और कुछ? ड्यू टू सम कुछ टास्क है इसीलिए आज जल्दी थोड़ा वाइंड अप कर रहा हूँ सेशन में। ओके, कल हम अर्ली स्टार्ट करेंगे, 8 o'clock स्टार्ट करेंगे टिल 11 रहेगा। कल इनिमेट 3.4 और पॉसिबल होगा तो 3.5 भी करेंगे। ओके, ओके सर। ओके सर। एंड संडे को थोड़ा एक्सटेंसिव क्लास रह सकता है, मैं आपको बताऊंगा अगर ओके मुझे सर। ऐसा वक्त मिल पाया
तो मैं आपको बताऊंगा। हम जो इवनिंग को थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, जैसे लास्ट टाइम संडे किए थे 6 बजे कुछ किए थे हम क्लासेस, तो संडे नहीं तो दशहरा से पहले। ऐसे ही इस सर बार संडे को भी थोड़ा लंबा क्लास रखेंगे सर अराउंड 6:30। ओके, तो उस चीज सर को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ले ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। हम दुर्गेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर ये जो पीईई कॉन्सेप्ट है, इसको सर मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए सर? मेरा कुछ सिनेरियो के जो आंसर मैंने किया है उसमें थोड़ा उसके लिए कुछ बता देते सर। पी प्रिंसिपल के लिए आपका जो मेजर मिस्टेक्स है, एविडेंस स्पेसिफिकली, आपको बाकी सबकी नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो रिपोर्ट है उसमें आप मैंने जो है एविडेंस आप आसपास जाते हैं, बट करेक्ट एविडेंस को छोड़ के बाकी जो जनरल नहीं, उसमें स्टेटमेंट। मैंने एक ही जो है वो मैंने ऊपर का लिया, ठीक है ना, वो मैंने दो दो में देखा था ऐसा कि दोनों में प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, तो मैंने फर्स्ट वाले को लेकर के चला, है ना। लेकिन एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे सर क्या सही है इतना एक्सप्लेनेशन, और या उससे ज्यादा चाहिए देखिए, इसमें? उससे ज्यादा करेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, देखिए यस सर। हमें जब आप जब स्कूल में हम पढ़ रहे थे, ओके, जब कोई टीचर हमें पूछते थे आपने खाना खाया, हाँ टीचर मैंने खाना खाया, ये होता है एक जो है फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, खाना खाया। ओके, सो यस सर। हमें फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करना है दैट यस दिस इज द फाइनेंशियल लॉसेस ऑर्गेनाइजेशन में पे ड्यू टू सो इन सो रीजन। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपके इसमें फुलफिल ऑफ एक्सप्लेनेशन मिसिंग है आपकी। यस सर। और इसके रीजन भी मैं बता। सेंटेंस सेंटेंस मेकिंग हाँ, मतलब एक वे में होना चाहिए जिसको कि अगला पढ़ करके उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में समझ आया। सके। यस हाँ। सर। और एक रीजन मैं बताता हूँ इसके पीछे की वजह क्या होता है जब हम इन शॉर्ट लिखते हैं। एक तो हम्म वक्त कम होना, हम्म दूसरा आलसा आलसी, हम्म। और तीसरा भी हो सकता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है। और मुझे आपसे ये तो नहीं लगा आपके स्टेटमेंट में कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसका स्टेटमेंट से पता चल जाता है। सो यू बेटर नो क्या स्टेटमेंट देना है। इधर आप आलसी हो रहे हैं या फिर आपको वक्त नहीं मिल रहा, और ये वक्त का दोनों। सर थोड़ा कमी हो जा रहा है, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से उसको कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है सर, वो टाइम लग जाता जल्दी है। नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है, जितना कर रहे हैं उतना उतने में परफेक्शन लाना है। यस सर। बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। हम प्रोफेशनल से हम जल्दी नहीं करेंगे, हम हड़बड़ी नहीं करेंगे, बट जितना करेंगे उतना परफेक्ट करेंगे। ओके, हम्म। सो उस चीज को ध्यान में दीजिएगा, आपको पता है राइट एविडेंस क्या है। और हमेशा जो विजिबल एविडेंस है वो पहले पकड़ लीजिए। हम्म। बाकी ओके सब सर। जो ऑप्शनल्स तो आगे आते रहेंगे, जब एंड में नहीं मिला तो क्या करना है। हमारे पास वक्त है, हम पॉइंट और दे सकते हैं, यहाँ पे कोई तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 10 ही लिखना है। पॉइंट से पूरा पेपर पढ़ा है, पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ा है, टाइप कीजिए, जितना हो सके उतना टाइप कीजिए, ठीक है, पर पहले विजिबल एविडेंस उठा लीजिए। ओके, ये हम्म। आपके आपके लिए है ये रिकमेंडेशन। ओके, यस सर। और आज भी और किसका मैंने रिव्यू किया, श्रवण जी। श्रवण जी यस हमेशा सर। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। ओके सर। गलत इंस्ट्रक्शन कोई भी कभी भी फॉलो मत कीजिए। और ये हैबिट्स इसीलिए रख रहा हूँ, मैं अभी चाहता तो वो असाइनमेंट जो आपने दिया था वो रिव्यू कर देता, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं। बट चीज क्या होता है, इट विल सेंड ए रॉन्ग मैसेज टुवर्ड द सेट, जो दूसरे हैं ओके उनके लिए वो गलत मैसेज जाएगा। ओके, ठीक है सर। सो आप राइट जगह पे सबमिट कीजिए, मैं उसको रिव्यू करके बिल्कुल दूंगा। ठीक है सर, भेज दिया हूँ, देख लीजिएगा। तो ग्रामर के ऊपर भी काम करना है, सेंटेंस इधर उधर हो रहे हैं सर कौन। इसमें इसमें जो ग्रामर का जो मतलब ऑटोमेटिक आता है इसमें, ग्रामेटिकल करेक्ट होना, वो सही नहीं नहीं, रहता क्या? नहीं वो सही क्या होता है, अभी देखिए गूगल भी एक एआई टूल है, वो हम्म, अपने हिसाब से किसी ने उसको स्टेटमेंट डाला रहेगा उस हिसाब से डालते हैं। आप देखिए इसी स्टेटमेंट को गूगल ट्रांसलेशन में जाइए, क्या देखिए क्रॉस चेक हमारे करना है। जब हम इंग्लिश में पुअर है तो हमें क्रॉस चेक हम्म, करना है, ग्रामरली यूज करके मैंने सेंटेंस बना दिया। अभी उसी सेंटेंस को लाके आप गूगल ट्रांसलेशन में डालिए, उसका हिंदी आउटपुट क्या आता है वो ओके। देखिए। ये ठीक है सर। सिंपल तरीका है, देखेंगे आपने जो सोचा रहेगा उससे भलता ही आएगा।
जो आपने भी बोला रहेगा मैंने क्या अजीब सा चीज लिख दिया है। हम्म। ओके, सो ठीक है ये सर। क्रॉस चेक कीजिए जब हम किसी जगह पे हम पुअर है इंग्लिश को लेकर, तो हमें क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा, हमारे और कोई दूसरा सोल्यूशन है नहीं उसके लिए। ओके, और ठीक है सर। कंप्लीटली कभी भी कोई भी टूल्स के डिपेंडेंट भी मत रहिए, डिपेंडेंसी हमें तोड़ती है। टूल ठीक यूज है सर। कीजिए, जैसे कहाँ पे यूज होता है टूल्स की अगर बात करें तो कहाँ पे यूज होता है। कभी कभी क्या होता है हर वर्ड हमें समझ में नहीं आता है, जैसे कि मैंने डे 1 में बताया था, हर वर्ड जो होता है सिनारियो में ऐसा कोई वर्ड आ ही जाता है जो हमें समझ में नहीं आता, और आना ही है, हर बार आया है, इस बार भी आएगा, हमेशा आता है। तो उसके लिए हमें जो गूगल ट्रांसलेशन की यूज करनी पड़ती Sir, one doubt. है। हाँ, Without using the technical word also, we just explain the scenario as per the things also, it is accepted only. No, it not is definitely. I want this technical word is to be there, not like that and all. Technical word should meet the with the scenario should be there, but not mandatory. Mandatory है ना? हाँ। Mandatory वन है मोर थिंग, as per सेशन आगे बढ़ने से पहले जो भी लर्नर को कुछ डाउट्स नहीं है वो रूम क्विट कर सकते हैं। ओके, हाँ। बाकी बाकी